just here. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jayo Radha Gopinatha Radha Gopinatha Radhe Jaya Krishna Balaram Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Subhat Swami Srila Guru Maharaj Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hare Krishna. Welcome everybody. Very happy. So I am to take this class Dhyana Yoga. We are discussing अभी हम 6th chapter Bhagavad Gita 6th chapter, that is Dhyana Yoga. Krishna is instructing Arjuna about Dhyana Yoga. So दोबारा हम कल का क्लास का थोड़ा
ब्रशअप करते। सो अब हम सबको पता है, वी आर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर नॉट दिस बॉडी एंड वी आर दिस सोल। एंड उसको हमें हमेशा याद में रखना है, और उसको हम डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कोशिश करना, कि कभी कोई ऐसी जरूरत है कि एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हम वी आर नॉट दिस बॉडी। सो बट कल भी बहुत लोग बोल रहे थे कि हमें पता होता है बट वी फेल टू इम्प्लीमेंट। व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ द फॉरगेटफुलनेस। बिकॉज ऑफ द फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस की वजह से हमें वो याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। व्हाई व्हाई वी फॉरगेट? बिकॉज मन बहुत ये मेटेरियल चीजों में फंसे रहते हैं, इसके लिए इसलिए हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। तो हाउ टू कंट्रोल दिस माइंड? माइंड को कंट्रोल में लेके आने के लिए कृष्णा इज सजेस्टिंग और एक्सप्लेनिंग अर्जुना अबाउट ध्यान योगा। मन को वश में लेके आने से क्या इंपॉर्टेंस है? सो अटेन्स ट्रैंक्विलिटी। कोई भी हम किसी भी अवस्था में है, मन शांत पीसफुल रहेगा, शांत रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। और कुछ भी आ जाए, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, हीट, कोल्ड, मान सम्मान, मन वश में है, ये चीजों को हम एक ही सेम एक ही दृष्टि में हम देख सकते हैं। कंट्रोल्ड माइंड ऑटोमेटिकली फॉलोज द डिक्टेशन ऑफ द सुपर सोल। जो हम वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। सोल के साथ साथ लिविंग एंटिटीज का अंदर और भी एक चीज है, वो सुपर सोल, परमात्मा। कृष्णा is present in each and every living entity as a परमात्मा। परमात्मा का रूप में कृष्णा अवस्थित है। अगर हम योग का वजह से हमने मन को कंट्रोल में लेके आए, तो वी कैन हियर द डिक्टेशन ऑफ द सुपर सोल। भगवान क्या बोल रहे हैं, वी कैन, दैट इज पॉसिबल। सो विद दिस नॉलेज एंड रियलाइजेशन वी कैन बी, हम सेल्फ कंट्रोल में रह सकते हैं। सो ऐसे व्यक्ति को, इफ वी आर ए सोल, सो बॉडी रिलेटेड थिंग्स जो कुछ भी है, पोजिशन, मेटेरियल ऑपुलेंस, स्ट्रेंथ, नेम, फेम, सो देर इज नो डिफरेंस। उसको कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम बॉडी नहीं है। ओके, सो दिस वी हैव डिस्कस्ड। एंड हमने ये भी देखा कि कृष्णा इज टेलिंग हाउ योगा शुड बी प्रैक्टिस्ड। ध्यान योगा इज वेरी डिफिकल्ट, हमें पता है, कि हमें भी डिस्कस किया। सो हाउ ए ट्रांसेंडेंटलिस्ट, हाउ ए योगी विल परफॉर्म? सो योगी एंगेज his body, mind and self in relationship with supreme. So man, they go, so he will engage in the relationship with the supreme, and he tries to live in a secluded place or a sacred place, like any dham, Mathura, Vrindavan. I say there are so many, Prayag, Haridwar, Rishikesh. So I say try to live in a secluded place and always carefully control his mind. So becoming free from desires and feelings of possessiveness. When we are not controlling this mind will always ये material world में feelings of possessiveness में घूमते रहते हैं. So to control
to take away from that mind, from all of them, and to concentrate on the soul and super soul within us. So we know this, we are not this body, we are soul, but soul का एक important property, characteristic है सच्चित आनंद विग्रह, सच्चित आनंद स्वरूप. So ये सच्चित आनंद, to realize Satchit Anand. Sat means is eternal. Soul is eternal. Chit. Chit means full of knowledge. Means soul means we. We are eternal. We are knowledgeful, and Ananda. We are blissful. That is our nature. So when we realize that, so we can be happy at all times. So now Krishna is instructing Arjuna, ये जो ध्यान योग या ध्यान योग प्रैक्टिस करता है वो कैसे कर सकता है. So वो secluded place में जाके so lay kusha grass on ground, cover it with deer skin with a soft cloth, and कौन सी जगह होना चाहिए, neither too high nor too low. डिस्क्राइब दे रहा है. तो जो हठ योग करके और ध्यान योग करके सेल्फ रियलाइजेशन करने सोचता है वो कैसे करना पड़ेगा. सो वो ध्यान करना है तो मेटेरियल चीज का अंदर बैठ के नहीं कर सकते ना, ट्रैफिक में बैठ के. सो उसको ऐसे जगह जाना है, बैठना है. कहाँ बैठना है, जो जगह वो neither टू हाई nor टू लो. एंड उस क्या करना है, sit very firmly and practice yoga to purify the heart by controlling his mind, senses, and activities, and fixing the mind on one point. So ऐसे करने से मन कंट्रोल में आ सकता है. देखो, sit very firmly and practice yoga. क्यों करना है योगा प्रैक्टिस? Very important is purify the heart. So प्रभुपाद बोलता है, so majorly to ये सब करने से हार्ट शुद्धता होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट by controlling mind, senses and activities. एंड ध्यान योगा में और क्या है कि होल्ड one's body, neck, head erect in a straight line, ताकि हम माइंड को कंट्रोल में रखें. Stare steadily at the tip of the nose. तो पूरा आंख बंद करके बैठ गया तो सो जाते हैं ना, तो ओपन, half open the eyes and stare at the tip of the nose. And you should sit unagitated, subdued mind. मन ऐसे बैठेगा तो मन चुप रहता है क्या? नहीं, यहाँ वहां घूमता है, तो फिर उसको पकड़ के लेके आना है. एंड ऐसे सेक्लूडेड में प्लेस में रहता है, डिवाइड ऑफ फियर, तो फियर भी होगा. सो विदाउट हैविंग senses over the other living entities surrounding, completely free from sex life, one should meditate upon me within the heart and make me the ultimate goal of life. If one can do like this, keeping Krishna in the heart and make Krishna as ultimate goal of life, if anybody can do like this, then after long years of practice, he can purify the mind, he can purify the heart, and ऐसे करके he can become one with Krishna. He can realize Krishna, not one with Krishna, he can realize Krishna. So Prabhupada बोलते हैं परपट में, can anybody practice like this? Can you imagine? Secret place में रखे, then neck, body, head सीधा रख के stare steadily at tip of the nose. कितना दिन कर सकते हैं, कितना घंटा कर सकते हैं? So Prabhupada बोलता है, in Kali-yuga, when people are general or short-lived, people in general are
short-lived, very less हमें lifeline. Then slow in spiritual realization. ऐसे नहीं कि एकदम हम perfect होके बैठ सकते हैं. So we are slow in spiritual realization and always disturbed by various anxieties. कि भगवान मिलेगा नहीं मिलेगा, प्यूरिफिकेशन होगा ना होगा, ये पेड़ गिरेगा, कुछ होगा. So these are many anxieties and personal, physical, relational, many things. So Prabhupada say, in the age of this Kali Yuga, so this type of practice is not so easy. So the best means of spiritual realization is chanting the holy name of the Lord, because holy name of the Lord is as equal to Krishna. Krishna का बराबर है his name. The name is as pure as Krishna. So by chanting the name of Krishna, we can also become pure. See, I give, even Prabhupada gives this example. How one can become pure. How one can purify the heart. You see, by practice yoga, purify the heart. But to practice this yoga, so all these things are necessary. But Prabhupada suggests in Kali Yuga, the best means of spiritual realization is chanting the holy name of the Lord. Why? The name of the Lord is very, very pure. तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, how the iron rod, आपको आयरन रॉड को अग्नि में रखेगा तो क्या होता है? आयरन रॉड becomes hot. उसके बाद very hot, red hot और red hot, ऐसे होके फाइनली इतना हॉट हो जाता है वो अग्नि का बराबर हो जाता है. The properties of the iron rod becomes equal to that of the fire. So how iron rod इतना अग्नि कैसे बन गया? By association with fire, iron also become fire-like property. So similarly, by chanting, by association with the pure, we can purify the heart. So what is the pure then? How to associate with the pure? The purest of the pure is Lord Shri Krishna, Paramatma, Super Soul. But we cannot associate with him directly. So the option with us is chanting his name. By chanting, we can purify the heart. So the name of the Lord is the mantra, Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. By chanting the holy name of the Lord, we can purify the heart. So then, whatever the benefit we get from the control of mind can be easily obtained by the chanting. So that is called mantra meditation. So Krishna is explaining again why one must do yoga. Why one must do yoga? Here, in the material world, yoga is restricted to physical strength, health, and well-being. But real purpose of yoga or chanting the holy name by meditation, yoga meditation, is to achieve Krishna, is to know Krishna. The goal of life is to know Krishna, who is situated within the heart of every living being as Paramatma. Very much carefully, one must understand this and remember, our goal is to know Krishna. So where is Krishna? Krishna is situated in everyone's heart as Paramatma. The four-handed Vishnu form, Krishna is staying. Sabka andar hai. The yoga process is practiced in order to discover and see
this localized form of Vishnu. तो क्यों हमने योगा क्यों करना है? फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए नहीं है, मोर देन दैट, मोर देन दैट, जो हमारा अंदर जो परमात्मा है इन द सुपर सोल, so to discover him and see this localized form of Vishnu. If our goal of yoga is this, then we are situating in perfect. So if not, one who has no program to realize this Vishnu Murti, अगर उसके लिए नहीं है but only सिर्फ physical well-being के लिए है, then we are uselessly engaged in mock yoga practice and is certainly waste of time. So जो कुछ भी हम कर रहे हैं योगा का नाम पे, it is just waste of time. One cannot be fearless unless one is fully in Krishna conscious. So in this material world, we are being caused by threefold of miseries. We are being caught by threefold of miseries. The misery caused by our own mind, misery is caused by the living entities surrounding us, and the living miseries from the nature. So we are actually troubled by them. So if we are not in consciousness, Krishna consciousness, we cannot be fearless. Okay, so a conditioned soul is fearful due to perverted memory. So forgetfulness of his eternal relationship with Krishna. So Krishna is, Prabhupada is saying, our forgetfulness, क्या forgetfulness? हमारा eternal relationship with Krishna. हम और कृष्णा, लिविंग एंटिटी एंड कृष्णा का बीच में एक रिलेशनशिप है. जब हमने तो उसको भूल गया, इसीलिए हमें वी आर ऑलवेज इन fearful. So if we can able to re-establish, उसको दोबारा हम re-establish कर पाए by the system of yoga, by mantra meditation, if we can able to establish that relationship, then our life is successful and we can have fearlessness. Okay, that is possible only in Krishna consciousness. तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो Krishna is continuing, there is no possibility of one becoming a yogi. Arjuna, oh Arjuna, one cannot become a yogi like this, whatever we have discussed, unless he has control over eating and sleeping. Okay, so इसीलिए पहले आ जाता है यमा नियमा, habits, rules and regulations. हम being the aspirant for self-realization, we are all aspirants for realizing our own self. हम क्या है, हमारा purpose, goal of life क्या है, ये सब we are in the line of understanding them. So being the aspirant, so Krishna is saying we cannot become such an aspirant unless if one eats too much or eats too little. These are all the habits. Regulated eating and regulated sleeping. If he sleeps too much and do not sleep enough, we cannot become a perfect yogi. So habits are very important. Regulated habits, regulated eating, regulated sleeping, and recreation. So वो regulated eating, regulated sleeping क्या है? So we'll see what is that, what we should eat, what we should not eat, how much I should sleep, how much I restrict myself to recreation and work. So if we can able to regulate these four things, then we can mitigate. then हम जो कुछ भी material pains आ रहा है, उसको हम कम कर सकते हैं या उससे हम बच सकते हैं. So Prabhupada says, anyone who eats for sense pleasure, अगर हम यहाँ ये खाना अच्छा है, वहां वो खाना अच्छा है, अगर ऐसे ढूंढ के हम
सेंस प्लेजर के लिए हम खाना खाते हैं और कुक करके खाते हैं। ये आप सब लोग देखा होगा ना, वो रेस्टोरेंट में ये खाना अच्छा मिलता है, ये रेस्टोरेंट में ये समोसा अच्छा लगता है। इफ वी आर ईटिंग और आम आदमी की तरह, those who are the materialistic people, those who are after these type of sense gratification by eating, so then cooking himself such foods, not offering his food to Krishna, eats only sin. We are mistakenly practicing all these things. हमारा एक्चुअली आपने प्रीवियस जनरेशन को देखेगा तो उस टाइम में तो इतना रेस्टोरेंट भी नहीं था, लोग ऐसे भी थे। उस टाइम में भी कुकिंग इज ए सैक्रिफाइस। शुद्ध होकर कुक करते थे, भगवान को ऑफर करके प्रणाम करके खाते थे। अभी भी स्कूल्स में देख बोलते हैं ना कि हाँ, बिफोर टेकिंग फूड टेक द नेम ऑफ लॉर्ड, प्रेयर, वो सब इट इज ऑल फ्रॉम आवर कल्चर कि after preparation of the food it should be offered to the supreme lord because he is the one who has given this food. So otherwise we are eating only sin. Now what is this regulated habit? So if you see what is this regulation of eating, sleeping and work, as far as eating is concerned, it can be regulated only when it is practiced to take food which is offered to Krishna. Okay, so then our tongue can be controlled, belly can be controlled. So restrict yourself to eat only that which is offered to Krishna. So sleeping क्या है? As far as sleeping is concerned, a Krishna conscious person is always alert in the discharge of his duties. वो क्या है? वो सोचता रहता है कि मेरे को चैंटिंग करना है, मेरे को जप करना है, मेरे को मंगलारती करना है, मेरे को बुक रीडिंग करना है, तो उसके लिए समय निकालना है। So therefore वो क्या है? Unnecessary time spent in sleeping is considered a great loss. ज्यादा सो गया तो उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो he thinks बहुत लॉस हो गया आज, मेरे को चैंटिंग नहीं कर पाया, मंगलारती नहीं कर पाया, बुक रीडिंग नहीं हुआ, हियरिंग नहीं हुआ, सुना नहीं, क्लास नहीं सुना, बुक नहीं पढ़ा, सो मेरा ग्रेट लॉस हो गया आज। अगर हम ऐसे सोच पाए देन वी आर इन रेगुलेशन। और काम, as far as work is concerned, okay, work for the body is one thing, but a person in Krishna consciousness do not do anything which is not connected with Krishna's interest. So, and thus he works is always regulated and is untainted by the sense gratification. Whatever which is required for maintaining body soul together and working for it is okay, acceptable. And whatever we earn should be offered for the service of Krishna. And at least while working, it is good to remember Krishna. So a Krishna conscious person try to engage in those activities where he can remember, he mold himself. He fit himself in such a way, he tries to avoid the work which is not connected with Krishna's interest. So Prabhupada is one such yogi. So he was well disciplined in the activities of mind that he can no longer be disturbed by any kind of material desire. A perfect yogi is one, he is well disciplined in terms of eating, in terms of sleeping, in terms of work and recreation. So a truly Krishna conscious person always absorbed in transcendence. Transcendence means in remembering Krishna's name,
pastime, lila, roop, and is in constantly undisturbed meditation on his worshipable Lord, and is as steady as a lamb in a windless place. आपने देखा होगा ना, अगर कोई लैंप को जहां विंडलेस प्लेस में ज्यादा हवा नहीं है, वो आप देखो वो बहुत ही स्टडी रहता है लैंप। अगर विंड आ गया वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। टू सो ए ट्रांस और समाधि स्टेट वेयर ही कॉन्स्टेंटली ही कैन मेडिटेट ऑन कृष्णा। सो कहां से आगे देखिए, पहले रूल्स एंड रेगुलेशन आ गया, यमा नियमा, उसके बाद आ गया कि आसना प्राणायामा, टू एटलीस्ट टू सिट सम टाइम प्रॉपरली, यू शुड बी लिटिल बिट फिजिकली फिट। उसके बाद मेडिटेशन, धारणा, विथड्रॉवल ऑफ द सेंसेस, ऐसे कर चलकर ये अष्टांग योगा में द लास्ट स्टेप इज समाधि। इस समाधि में क्या है, माइंड इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम मेटेरियल मेंटल एक्टिविटीज। तो मन तो बहुत ही चंचल है, उसको हम वो सारा डिस्टर्बेंसेस से, मेटेरियल मेंटल एक्टिविटीज से निकाल के आके उसको कृष्णा की तरह उसको कंसंट्रेट करना। एंड सीइंग द सेल्फ बाय प्योर माइंड, अगर हम ऐसे कर पाए तो समाधि का स्टेट में हम वी कैन रियलाइज आवर सेल्फ, वी कैन सी विजुअलाइज आवर सेल्फ, visualize the self, and we can also visualize the Paramatma sitting in the heart. And in that state, he can relish and rejoice in the self. उसको किसी का जरूरत नहीं है, उसको he can able to, वो उसको खुद को भी देख रहा है, परमात्मा को भी देख रहा है, he is seeing Krishna within his heart and everywhere, and he is just happy with that. उसको कार, बंगला, नेम, फेम, पोजीशन किसी का जरूरत नहीं, बिकॉज वो सब मेटेरियल चीज है, बॉडीली रिलेटेड है। और वी आर आत्मा, आत्मा इज सेल्फ सफिशिएंट, सच्चित आनंद, नॉलेज है, वी आर एटर्नल, वी आर नॉट बॉडी, बॉडी विल डाई, आत्मा तो एटर्नल है, आई डोंट डाई। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारता। नथिंग कैन किल मी, नथिंग कैन बर्न मी, नथिंग कैन विदर मी, आई एम एटर्नल। एंड मेरे को आई एम बाय कंसंट्रेटिंग दिस, बाय मंत्र मेडिटेशन, by all this yoga, bhakti yoga, I have already acquired the knowledge, सत हो गया, चित हो गया, now I am visualizing self, I am visualizing Paramatma, and I am happy with that. That is Samadhi. So situates in boundless transcendental happiness. So अगर वो समाधि में पहुंच पाए, then उसको वो सत्य से वो दूर नहीं पाएगा, डिपार्ट, one never depart from the truth. Upon gaining this, he thinks there is no greater gain. इससे बड़ा कुछ नहीं है, because I am self and happy with the Paramatma. Never shaken, even in the midst of greatest difficulty. अगर किसी ने ऐसे करके समाधि तक आ गया, वो कुछ ग्रेट, वो कोई भी डिफिकल्टी आई, so he is undisturbed, never shaken. So this state is actual freedom from all miseries arise from material content. Okay, this is Samadhi. This is actual yoga. Okay, so अगर कोई आपको योगा कराता हूँ करके बोलेगा तो हाँ समाधि तक लेके आ सकते हैं क्या उसने, हाँ, then he is doing ध्यान योगा. But और एक यहाँ ये प्रॉब्लम है, in this age of Kali, can anybody can do like this and reach that state? 10 मिनट आप बैठेगा तो मोबाइल रिंग होता है, 10 मिनट बैठेगा तो कोई दूसरा आ जाता है, कुछ पूछ रहा है, पैर दर्द होता है, बीमारियां है, कोई आ गया, और सेंसस वहां पूछता है चलो चलो खाना खाएंगे, चलो वहां ये मिलता है,
देखो उन लोग कैसे बन गया, आप तो ऐसे रह गया, ये सब कंपैरिजन आ जाता है ना। सो इसका ऊपर और भी डिस्कस होगा आगे, बट पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन आल्सो रीच वेरी इजीली टू दैट स्टेट by the best practice of yoga in this age is Krishna consciousness. आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के, फैमिली में भी रह के, इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड itself stay, practice Krishna consciousness, and we can also happily reach the state of samadhi. A Krishna consciousness person is so happy in his occupation that he does not aspire after any other happiness. उसको भी ऐसा लगेगा कि I am working and I am doing Krishna consciousness and enough, मैं कृष्णा का सेवा कर रहा हूँ, and जो आ रहा है उससे फैमिली में बॉडी एंड सोल मेंटेन हो रहा है, आई एम हैप्पी, आई एम गेटिंग द सर्विस टू सर्व कृष्णा, मंत्र मेडिटेशन, आरती, ध्यान, क्लास, do seva, devotee seva, Krishna seva, over, he is also very happy. Usko bhi, he is not aspire after any other happiness. And he is callous towards incidental occurrences. क्या है, एक्सीडेंट हो जाता है, बीमारियां आ जाता है, स्कैरसिटी, कुछ कभी कहीं पैसा नहीं होगा या कुछ कुछ नहीं होता है, इवन इन द डेथ ऑफ द मोस्ट डियर रिलेटिव, अगर किसी का डेथ हो गया, because he knows I am soul and his relationship with super soul, he knows the क्यों आ रहा है, because he has got this fundamental जो knowledge है उसका उसका पास रहता है, so he is careless, उसको ज्यादा चिंता नहीं है, वो चिंतित नहीं होता है, उसको पता है ये तो this material world is temporary, this material world is full of misery, so क्या है, मैंने कल एग्जांपल दिया ना, तो ये कॉल में कम, ये कभी भी बुलावा आ सकता है कि चलो चलो इस देह को आपको छोड़ना पड़ेगा अभी, तो दूसरा 1 मिनट 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं मिलेगा, जाना ही पड़ेगा सबको छोड़ के, तो चिंतित होने का क्या है। सो दिस नॉलेज विल कम टू कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, एंड वो हमेशा ही इज डिपेंडिंग ऑन कृष्णा, सरेंडर टू कृष्णा, कृष्णा विल टेक केयर, एंड ही वर्क्स डिसिप्लिन, he is always alert to execute his duties. He never callous, means he is not callous about his duty. He is always alert to execute duties in Krishna consciousness or Bhakti Yoga. So he runs very strict, regulated life more than any other yoga system, yogi in any other yoga system. ऐसे वैसे खाना नहीं खाएगा, only offered Krishna prasad. Prasadam also purifies the heart and existence. He does seva to Krishna, so that also purifies. And he also does his occupational duty, whatever required for this maintenance. So whatever अचानक कुछ भी होगा, he that can never deviate him from his duty, वो करता ही रहेगा. So that is the Sthita Prajna, and in that way he is well disciplined, well regulated. And he endures all such incidental occurrences because he knows that they come and go and do not affect his duties. This is the real knowledge he gets because of the association with Krishna, seva, Krishna devotees. क्या है? Whatever the miseries, they come and go like clouds and weather. So whatever the incidental occurrences, जो जो एक्सीडेंट्स होता है, एक्सीडेंट्स मतलब जो कुछ भी इंसिडेंट्स होता है, अच्छा बुरा, किसी का प्रेस कर दिया, ठीक है, वो आज प्रेस कर रहे हैं, कल कुछ भी कर सकते हैं, किसी ने बुरा किया, आज बुरा हुआ, कल वो चले जाएगा. सो इन दिस वे ही इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन मर्सी ऑफ कृष्णा, सो ही इज आल्सो गेट द सेम प्लेजर एज दैट ऑफ द योगी इन समाधि. So Prabhupada said, this
type of Bhakti Yoga system is very much easy in this age of Kali Yuga. Okay, so how to fix the mind? So I think you can we'll complete this slide. So how one can fix? In full conviction, intelligence sustained by full conviction. Mind should be fixed on the self alone and should think of nothing else. So Krishna is saying in Dhyana Yoga, so intelligence is sustained by full conviction. हमें conviction is very much important. मेरे को Krishna, he will protect me. Krishna maintains me. So that intelligence भी होना चाहिए, उसका ऊपर conviction also. And mind should be fixed on the self alone and should not think anything else. From wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it. While chanting, while taking the name of Krishna, so we should concentrate on this Paramatma, and whenever it goes out, we should bring it back. दोबारा उसको लेके आना है and bring it back under the control of the self. A yogi whose mind is fixed on me verily attains the highest perfection of transcendental happiness. If we can control mind and take it to Krishna, so highest perfection of transcendental happiness वो हमें मिल जाएगा. अगर ऐसे देखिए मेटेरियल वर्ल्ड आदमी क्या क्या सोचता रहता है, कब घर कैसे बनेगा, हमारा सिक्योरिटी, फैमिली, सब कुछ. But a person in Krishna consciousness can also achieve them by surrendering to Krishna. But he is not worried about of not getting it. Okay, that's the point. Okay, yogi realizes his qualitative identity with the Supreme. So, very important point here is we the soul and Krishna is the super soul. What is the difference between the soul and super soul? Krishna is Vibhu. He is infinite. We are Anu, infinitesimal. There is a huge difference. Sea and drop of ocean and drop of ocean. Krishna is a ocean and we drop of ocean. Okay. But qualitatively, the quality of a drop of ocean and quality of the ocean is same. ये भी salt water है, वो भी salt water है. इसमें भी salt है, उसमें भी salt है. But quantitatively different. So if you consider that Krishna is having, our soul is having similar characteristics. Krishna is also Satchidananda Vigraha. We are also Satchidananda Vigraha. We are qualitatively same, quantitatively different. Krishna can do anything. Krishna knows the mind of everyone, each and every living entity, but I know only about mind. Correct? So, yogi realizes his qualitative identity with the Supreme, and thus he is free from all reactions to past deeds. So, whatever the success, failure, happiness, distress, whatever it is we are getting, it's all because of the past deeds, karma. So, but as a soul, I am not actually have got relationship with this body and bodily karma. I am aloof from all of them. मैं उससे बाहर हूं. Soul is apart from all of them.
So, and soul characteristic again, Sachit Ananda Vigraha. So, by understanding these fundamental things, so he is free from all these reactions. Whatever reaction comes, reaction आएगा, accident आएगा, होगा, disease होगा, कुछ भी we may lose, but he is not disturbed. So that should be the goal of this human form of life, to understand Krishna, to understand myself, and establish the relationship with the Krishna. Okay, so I will stop there, and in the next class we will see how a true yogi can see Krishna, Lord, everywhere. Okay, so we can take up some questions and then we can end this session. So basically, in this chapter, Krishna is explaining Arjuna how one must perform yoga to realize the Krishna within is situated within us. Okay. And how difficult it is. Prabhupada says how difficult Dhyana Yoga in this age of Kali. This Dhyana Yoga is prescribed for the people who is there in the Satya Yuga. Unfortunately, we, forgetting all of them, we are just trying to copy the Ashtanga Yoga Sutra referred by Patanjali and trying to implement partially and trying to get all the benefit. That is not possible. वो हमें कभी भी वो लागू नहीं होगा and possible भी नहीं. So इसलिए, if at all, if you want to understand ourselves, understand Krishna situating in our heart, so Prabhupada stress upon mantra meditation. By that, we can purify ourselves. जो हम अष्टांग योग सूत्र से हम प्यूरिफाई करेंगे, सेम प्यूरिफिकेशन हम भक्ति योग से भी कर सकते हैं. एंड सिंपल पीसफुली हैप्पीनेस होकर within this material world we can do this. No need to go for a secluded place, no need to sit erect, keeping neck, head, spine erect in the same line, half open eyes, concentrating tip of the nose. वो करके सालों साल, हजारों साल बैठ के, क्योंकि मन तो, if at all, if heart is not purified, wherever you go, same आता रहेगा. वहां पे भी अगर आप फॉरेस्ट में गया तो मन यहीं पे रहेगा, क्या हो गया घर में, क्या हो गया, क्या तो रिलेटिव्स का साथ हो गया, क्या हो गया, मैं यहाँ आ गया कि मेरे को रियलाइजेशन मिलेगा नहीं मिलेगा. Without having proper understanding about the soul and super soul, without purifying them, wherever we go, mind will trouble us. Okay, so with this I will stop here. We will take up some question, and in the next class we will see how a purified devotee can see Lord everywhere. Very important. Hare Krishna.